Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, आज 5 जून 2020 क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग पार्ट 6 और इसका लास्ट पार्ट है। हमारा फर्स्ट स्टेप है बुक रीडिंग और मॉडल रीडिंग, उसके बाद वर्ड मीनिंग और उसके बाद क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ और बुक रीडिंग और मॉडल रीडिंग। Climate change has an impact not only on environment but also on society and economy. The potential consequences of climate change have been established beyond doubt at the global level, along with the fact that humans have been largely responsible for this change. The changes in the average global temperature during the last century are larger than can be explained by natural changes alone. 11 of the last 12 years have been the hottest since the recording of temperature started in 1850. Climate change impacts on different sectors in the state of Jammu and Kashmir are already evident and need to be assessed scientifically for each sector. Preliminary results from the research carried out in the University of Kashmir suggest that depending upon the level of future emissions, the average temperature increase in the valley by the end of the 21st century would be between 2 and 3 degrees centigrade. Erratic snowfall, hotter summers, climate variability, and change of both precipitation and temperature will affect livelihoods. Therefore, understanding and assessment of climate change impacts on water resources is critical for water resource planning, hydropower development, and protection against flooding so that we can secure life on the earth for our future generations. In the backdrop of looming water crisis in most of Asia, we, the custodians of the water tower of Asia, cannot afford to be complacent. We need to work with other stakeholders for developing a robust strategy for the sustainable development of water resources in the region. The children of tomorrow will bear the heavy burden of our independence if we do not act today. Climate change has an impact not only on environment but also on society and economy. मौसम में आई तब्दीलियों का असर न सिर्फ माहौल पर पड़ा है बल्कि समाज और मैशत पर भी इसका असर पड़ा है. The potential consequences of climate change have been established beyond doubt at the global level, along with the fact that humans have been largely responsible for this change. मौसम के बदलने के मुमकिन नताइज को बिना किसी शक के आलमी सतह पर नाफिज किया गया इस हकीकत के साथ कि इंसान इस बदलाव के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है. The changes in the average global temperatures during the last century are larger than can be explained by natural changes alone. 11 of the last 12 years have been the hottest since the recording of temperatures started in 1850. पिछली सदी के दौरान औसत आलमी दर्जा हरारत में आई तब्दीली इससे ज्यादा है कि जितना सिर्फ कुदरती तब्दीलियों के जरिए समझाया जा सके. साल 1850 से जब से दर्जा हरारत को दर्ज किया जाना शुरू हुआ तब से पिछले 12 बरसों में से 11 बरस सबसे ज्यादा गर्म रहे. Climate change impacts on different sectors in the state of Jammu and Kashmir are already evident and need to be assessed scientifically for each sector. रियासत जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टरों में मौसमी तब्दीली के असरात अभी से दिखाई दे रहे हैं और हर सेक्टर में इनका जायजा लेना लाजमी है. Preliminary results from the research carried out in the University of Kashmir suggest that depending upon the level of future emissions, the average temperature increase in the valley by the end of 21st century would be between 2 and 3 degrees centigrade. कश्मीर यूनिवर्सिटी में की गई तहकीक के इब्तिदाई नताइज बताते हैं कि मुस्तकबल के खराज की सतह पर इंसार रखते हुए 21वीं सदी के आखिर तक वादी के औसत दर्जा हरारत में 2 और 3 सेंटीग्रेड के बीच इजाफा हो जाएगा. Erratic snowfall, hotter summers, climate variability, and change of both precipitation and temperature will affect livelihoods.
गैर यकीनी बर्फबारी, ज्यादा गर्म गर्मियों के मौसम, आब हवा की तगीर पजीरी और अमल तकजीर और दर्जा हरारत दोनों में तब्दीली रोजी रोटी पर असर डालेगा। Therefore, understanding that the assessment of climate change impacts on water resources is critical for water resource planning, hydropower development, and protection against flooding so that we can secure life on the earth for our future generations. इसलिए पानी के जरिया पर मौसमी तब्दीली के असरात को समझना और इनका जायजा लेना वसाइल की मनसूबाबंदी, पन बिजली का फरोग और सैलाबों से बचाव के लिए निहायत जरूरी है कि ताकि हम जमीन पर आने वाली नस्लों के लिए जिंदगी की हिफाजत कर सकें। In the backdrop of looming water crisis, most of Asia, we the custodians of the water tower of Asia cannot afford to the complacent. एशिया के ज्यादातर हिस्सों में खतरनाक ढंग से बढ़ते हुए पानी का बहरान बढ़ने के पस मंजर में एशिया के पानी के टावर को रखवाली होने के नाते हम लापरवाह नहीं हो सकते हैं। We need to work with other stakeholders for developing a robust strategy for the sustainable development of water resource in the region. The children of the tomorrow will bear the heavy burden of our indifference if we do not act today. हमें दूसरे शरत बंद स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक मजबूत हिकमत अमली बनाने के लिए काम करना होगा ताकि इलाके में पानी के वसाइल की पायदार तरक्की पर काम किया जा सके। अगर हम अभी भी कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली नस्लों को हमारी अनदेखी का भारी बोझ उठाना पड़ सकता है। तो अथ गई लेसन एंड इन मज द्राय वर्द गोज पोटेंशियल मीन्स मुमकिन कॉन्सिक्वेंसेस नताइज प्रिलिमिनरी इब्तिदाई इराटिक गैर यकीनी वेरिएबिलिटी बदलने की हालत तगीर पजीरी कस्टोडियन तहवीलदार मुहफिज रखवाला कंप्लीसेंट मुतमीन स्टेक होल्डर्स स्टेक शरत बंद या स्टेक होल्डर्स रबस्ट मजबूत स्ट्रेटेजी हिकमत अमली। तो अम मज द्राय क्वेश्चन अत बड़ एक्सरसाइज सह त्रो इथन इन बोर्डस पे कर कह। Question number 1. Why is water the most precious natural resource? आब क्या सारे खुद कीमती natural कुदरती वसाइल? Because it supports all plant and animal life. Without it, the earth will become a lifeless planet. अगर न यह सच प्रत कुन खुद support चाहे plant life वैसे animal life वैसे अगर न आब आस कहीं कि earth has आस the lifeless planet. What do you think is the cause of decrease in snowfall in Kashmir? तो क्या छु आत बारस में सोचा कि कश्मीर में क्या शीन कम गोमुत ग्लोबल